अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, और वो है आइल्स वोकैबुलरी से रिलेटेड। हाउ टू एनरिच योर आइल्स वोकैबुलरी, स्पेशली इन राइटिंग। राइटिंग में जितनी आप वैरायटी देंगे वर्ड्स की, जितने सिनोनिम्स लेके आएंगे, जितने जो हैं वो फॉर्मल वर्ड्स लेके आएंगे, हाई रेटेड वर्ड्स लेके आएंगे, उतनी ही आपको अच्छी राइटिंग जो है वो मिलेगी और आप उतने ही अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हाई रेटेड वर्ड्स, और उसमें आप हमेशा जो है वो उनको यूज़ करें और अपनी राइटिंग को और ज़्यादा अफेक्टिव बनाएं, ठीक है, ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको अच्छे बैंड्स दे। तो याद रखिएगा कि सिनोनिम्स जो हैं वो हमेशा राइटिंग करने से इम्प्रूव होते हैं। आप वर्ड्स की जो है वो वोकैबुलरी, वर्ड्स की एक फैमिली जो है वो क्रिएट करें, और मैं आज आपके लिए बड़े अच्छे क्रिएटिव वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि हमेशा आपके काम आएंगे, और स्पेशली आइल्स की राइटिंग के अंदर, ठीक है। होपफुली यू विल यूटिलाइज दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज़ अमेजिंग। अमेजिंग के जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, फैबुलस, एस्टोनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। The next word is answer. You can say respond. And the next word is awful, awful, terrible, abominable, dreadful. Bad, evil, spoiled, imperfect, infamous and dismal. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, लेकिन उसके आप अगर सिनोनिम्स देखें तो वो हैं गॉर्जियस, रैविशिंग, dazzling, exquisite and stunning. Begin, initiate, commence and inaugurate. Next word is big. A big may you can use the word huge, enormous, gigantic, humorous, substantial and mammoth. The next is break, rupture, fracture and shatter. Next one is calm, serene, serene environment, peace, tranquil. Come, approach, arrive, cool, chilly, frosty, icy, cut, chop, slash, slit, dangerous, hazardous, risky, and precarious. Next word is decide, determine, and settle. Definite, certain, positive, obvious. The next one is delicious, savory, tepid, delectable. The next word is describe, describe, and the describes के जो synonyms हैं वो है portray and characterize. The next one is destroy, demolish, slay, ruin, and raise. The next one is difference, disagreement, inequity, and dissimilarity. The next one is dull, boring, uninteresting, monotonous, humdrum, and dreary. Next one is end, terminate, conclude, and cessations. The next word is explain, elaborate, interpret. Next one is fall, drop, descend and topple. अब ये drop का जो word है ये IELTS राइटिंग टास्क के अंदर, राइटिंग टास्क 1 के अंदर आपको लिखने को मिलेगा, और उसमें आप drop के जो synonyms हैं उनको मज़ीद भी आप देख सकते हैं, जैसे descend, topple, goes down. The next one is famous, well known, renowned, eminent and illustrious. Next one is fast, quick, rapid, hasty and snappy. Next one is fat, stout, corpulent, chubby and bulky. Funny, amusing, humorous, droll. Get, acquire, obtain, secure, procure and gather. The next one is good,
अब there are multiple synonyms of good, and these are excellent, fine, wonderful, superior, gracious, superb, splendid, genuine, sterling, top notch. These are very high sounded words, and you can use in IELTS writing and speaking as well. The next one is great, worthy, distinguished, grand, considerable, and mighty. Next one is happy, pleased, delighted, elated, joyful, ecstatic, jubilant, and jaunty. Hate, despise, loathe, abhor, abominate. Have, possess, you need to have something, possess, or acquire, help, aid, assist, support, encourage, relieve. Hide, conceal, cover, mask, and veil. The next one is idea, thought, concept, and notion. The next one is important, necessary, vital, critical, indispensable, valuable, essential, famous, and notable. बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ एंड पे शेयर करूँगा, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इन वर्ड्स की फैमिली जो है वो आपको याद रहे और ये सिनोनिम्स याद रहें, तो प्लीज़ ब्रिंग देम इन योर राइटिंग। जितनी आप राइटिंग करेंगे, जितने ये वर्ड्स जो हैं, ये सिनोनिम्स आप अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाएंगे, उतने ये वर्ड्स आपको आगे आने वाले टाइम में आपके कंपटीशन के अंदर, आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प देंगे। एक बात याद रखिएगा, रट्टा मारने से कभी वोकैबुलरी नहीं बढ़ती। वोकैबुलरी हमेशा प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, और प्रैक्टिस ये है कि आप इन वर्ड्स को अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाएं, अपनी स्पीकिंग का हिस्सा बनाएं, और फिर ये वर्ड आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो स्पैन है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो मेमोरीज़ हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसमें वर्ड जब चला जाए तो वो फिर अनएंडिंग उसकी स्पेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और वो हमेशा आपके माइंड में प्रिजर्व रहता है। और उसके लिए याद रखिएगा, जितना आप वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे राइटिंग के अंदर, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो होपफुली आप इन वर्ड्स को अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाएंगे, और जैसा कि मेरा जो मिशन है वो आपको लैंग्वेज में एनरिच करना है, और आपको कम्युनिकेशन के अंदर मैंने जो है वो एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना है, ताकि आप आने वाले टाइम को अच्छे तरीके से फेस कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू वोकैबुलरी के साथ, और इससे रिलेटेड मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।